बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरियन पेन चैनल में खुशामदीद। ये वो चैनल है जहाँ पे आप कोरियन ज़बान सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। नए आने वाले दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो सीरीज में आप जानेंगे रीडिंग और लिसनिंग के 2000 क्वेश्चंस। मेरा नाम अहमद है और मैं कोरिया में 8 साल रहा हूँ और मैं वहाँ से टॉपिक लेवल 4 सर्टिफाइड हूँ। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ईपीएस टॉपिक के 2000 क्वेश्चंस की लिसनिंग सीरीज़ भी आज से हम शुरू कर रहे हैं और इसमें हम जो क्वेश्चन देखेंगे 1 से लेके 160 तक ऐसे क्वेश्चन होंगे कि 4 ऑप्शन होंगे और लेकिन वो सिर्फ एक बोलेगी, जो वो बोलेगी उसको आपने टिक कर लेना है। अभी जो ट्रैक हैं उनमें वो सारे ऑप्शन बोल रही है ताकि आपको वर्ड्स की पहचान भी हो सके और आपको प्रोनाउंसिएशन का पता चल जाए। लेकिन असल में जो आपका टेस्ट होगा उसमें चारों ऑप्शंस में से सिर्फ एक बोलेगी और आपने उसको टिक कर लेना है। ये जो बुक है और इसके साथ जो ऑडियो ट्रैक्स हैं उनको मैंने अपलोड कर लिया अपने ब्लॉग के ऊपर और उसका एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से इस बुक को भी डाउनलोड कर लें और जो ट्रैक्स हैं उनको भी आप डाउनलोड कर लें। तो अभी शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को और इस वीडियो में हम देखेंगे 40 क्वेश्चंस को। तो चलें क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं और इसमें जितने भी मीनिंग है वो नीचे लिखे हुए हैं, इसलिए वो मैं नहीं बोलूँगा। सिर्फ आप इसकी आवाज़ को सुनें कि कौन सी आवाज़ है और मीनिंग नीचे से आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस का मतलब सिर्फ यही है कि ये आवाज़ें आप सुनें और जो लिखा हुआ है उसको देखें ताकि आपको लफ्ज़ों की पहचान हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। 1번 문제입니다. इल्बन मुंजे, इल्बन बोलते हैं नंबर 1 को, मुंजे बोलते हैं क्वेश्चन को। 1번 우유, उयू, 2번 오이, ओई, 3번 아이, आई, 4번 이유, ईयू। सिर्फ आपने अब देखें यहाँ पे उसने सारे आंसर बोले हैं। सारे आंसर बोलने का मतलब यही है कि आपको इन लफ्ज़ों की पहचान हो सके ताकि जब आपने टेस्ट देना है तो वहाँ पे इन चारों में से सिर्फ एक बोलेगी और आपने सिर्फ देखना है उसके वर्ड को और जो उसने बोला उसको आपने टिक कर लेना है। आपको वहाँ पे उसका मीनिंग ना भी पता हो तो कोई इशू नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। 2번 문제입니다. ईबन मुंजे, ईबन बोलते हैं नंबर 2 को और मुंजे बोलते हैं क्वेश्चन को। 1번 아이, आई, 2번 오이, ओई, 3번 우유, उयू, 4번 아우. आऊ। 3번 문제입니다. नंबर 3 1번 이유, ईयू, 2번 오이, ओई, 3번 아이, आई, 4번 우유. उयू। 4번 문제입니다. नंबर 4 1번 여유, 여유, 2번 오이, ओई, 3번 아이, आई, 4번 이유. ईयू। 5번 문제입니다. नंबर 5 1번 이유, ईयू, 2번 야외, यावे, 3번 예외, येवे, 4번 이의. ईयुई। 6번 문제입니다. नंबर 6 1번 야외, यावे, 2번 예의, येवी, 3번 아예, आये, 4번 아우. आऊ। 7번 문제입니다. नंबर 7 1번 의외, उईवे, 2번 예의, येवी, 3번 이의, ईवी, 4번 여우. 여우। 8번 문제입니다. नंबर 8 1번 아예, आये, 2번 왜야, वेया, 3번 야외, यावे, 4번 예의. येउई। 9번 문제입니다. नंबर 9 1번 구두,
후두, 2번 누나, 누나, 3번 가구, 가구, 4번 누구, 누구. 10번 문제입니다. नंबर 10. 1번 휴지, अब यहाँ पे ह्यूजी लिखा हुआ है, लेकिन इसको आपने, ये जो टॉयलेट पेपर होता है, इसको आपने शूजी पढ़ना है, ठीक है। अगर शूजी बोले तो यही वाला आंसर होगा। आपने पजल नहीं होना ये ह्यूजी लिखने में, लेकिन पढ़ने में शूजी है। 2번 바지, फाजी, 3번 치마, 치마, 4번 가지, खाजी। 11번 문제입니다. 11. 1번 모두, मौदू, 2번 부자, पूजा, 3번 부모, फूमो, 4번 모자, मोजा। 12번 문제입니다. नंबर 12. 1번 과자, ख्वाजा, 2번 기차, खींचा, 3번 의자, उईजा, 4번 부자, पूजा। 13번 문제입니다. नंबर 13. 1번 있다, इत्ता, 2번 아빠, 아빠, 3번 아까, 아까, 4번 가짜, 가짜. 14번 문제입니다. नंबर 14. 1번 차다, छादा, 2번 자다, छादा, 3번 싸다, सादा, 4번 따다. तादा. 15번 문제입니다. नंबर 15. 1번 꼬리, कोरी, 2번 뿌리, पूरी, 3번 까치, काची, 4번 가짜. खाचा. 16번 문제입니다. नंबर 16. 1번 나빠요, 나빠요, 2번 바빠요, 바빠요, 3번 아파요, 아파요, 4번 예뻐요. 예뻐요. 17번 문제입니다. नंबर 17. 1번 오직, 오직, 2번 아침, 아침, 3번 마침, 마침, 4번 아직. 아직. 18번 문제입니다. नंबर 18. 1번 방, 방, 2번 발, 팔, 3번 땅, 땅, 4번 딸. 딸. 19번 문제입니다. नंबर 19. 1번 같아요, 같아요, 2번 닫아요, 닫아요, 3번 먹어요, 먹어요, 4번 받아요. 받아요. 20번 문제입니다. नंबर 20. 1번 갔어요, 갔어요, 2번 왔어요, 왔어요, 3번 있어요, 있어요, 4번 샀어요. 샀어요. 21번 문제입니다. नंबर 21. 1번 가게, 가게, 2번 고기, 고기, 3번 거기, 거기, 4번 기계. 기계. 22번 문제입니다. नंबर 22. 1번 아기, 아기, 2번 여기, 여기, 3번 누구, 누구, 4번 야구, 야구,
23번 문제입니다. Number 23. 1번 소고기, 소고기. 2번 어머니, 어머니. 3번 바가지, 바가지. 4번 주머니. 주머니. 24번 문제입니다. 24. 1번 아까, 아까. 2번 어깨, 어깨. 3번 고개, 고개. 4번 언니. 언니. 25번 문제입니다. Number 25. 1번 우유, 우유. 2번 와요, 와요. 3번 왜요, 왜요. 4번 위에. 위에. 26번 문제입니다. 26. 1번 가방, 가방. 2번 고장, 고장. 3번 거울, 거울. 4번 공부. 공부. 27번 문제입니다. 27. 1번 가게, 가게. 2번 노래, 노래. 3번 시계, 시계. 4번 지도. 지도. 28번 문제입니다. 28. 1번 어디, 어디. 2번 안내, 안내. 3번 우리, 우리. 4번 언니. 언니. 29번 문제입니다. 29. 1번 가수, 가수. 2번 아가, 아가. 3번 사과, 사과. 4번 자주. 자주. 30번 문제입니다. Number 30. 1번 누구, 누구. 2번 구두, 구두. 3번 누나, 누나. 4번 가구. 가구. 31번 문제입니다. 31. 1번 어머니, 어머니. 2번 아버지, 아버지. 3번 할머니, 할머니. 4번 아니요. 아니요. 32번 문제입니다. 32. 1번 오리, 오리. 2번 우리, 우리. 3번 오이, 오이. 4번 어디. 어디. 33번 문제입니다. 33. 1번 아버지, 아버지. 2번 어머니, 어머니. 3번 아저씨, 아저씨. 4번 아줌마. 아줌마. 34번 문제입니다. 34. 1번 과자, 과자. 2번 가짜, 가짜. 3번 기차, 기차. 4번 까치. 까치. 35번 문제입니다. 35. 1번 모래, 모래. 2번 미리, 미리. 3번 머리, 머리. 4번 마흔. 마흔. 36번 문제입니다. 36. 1번 얘기, 얘기. 2번 아이, 아이. 3번 여기, 여기. 4번 아기. 아기. 37번 문제입니다. 37. 1번 누구, 누구. 2번 누나, 누나. 3번 나라, 나라.
4번 구두 구두 38번 문제입니다. 38 1번 의자 의자 2번 여기 여기 3번 저기 저기 4번 여자 여자 39번 문제입니다. 39 1번 오리 오리 2번 어디 어디 3번 우리 우리 4번 아들 아들 40번 문제입니다. 40 1번 사과 사과 2번 이사 이사 3번 주소 주소 4번 치과 चिगवा। तो दोस्तों ये थी हमारी क्लास नंबर 1 लिसनिंग सीरीज़ की वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।